Hello students. So this is the second lecture of linear equations in two variables. In the first lecture we had done how to solve equations by substitution method. Substitution method में we used to eliminate one constant by substitution. मैंने उसका steps लिख के दिया था. Substitution method में आपको क्या करना है? Find the value of any one variable. किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, इधर x और y. एंड उसको है ना सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना. वैसे करने से एक वेरिएबल कम हो जाएगा एंड यू कैन find the value of the second variable, then make substitution and find the other variable also. We had done sums on that, right? Now today we discuss the second method, that's called as elimination method, और more precisely उसको और भी clear बोलना है तो you can say elimination method by equating the coefficients. Elimination method by equating the coefficients. So I'll write by equating the coefficients. So equating the coefficients of any one variable by equating the coefficients. Now in this method what you do is the most important step is you have to equate, or you can say make the coefficients equal. Equate the coefficients of any one variable. Any one variable means either x or y. Okay, equate the coefficients of any one variable in both the equations. In both the equations. So आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है या फिर y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है. Okay, so you can use multiplication if they are not same. You can use multiplication or you can solve by LCM method also. So I'm writing use multiplication. आपको sums में I'll let you know how to multiply. Okay, so equate the coefficient, that is the main headline of this method. You have to equate the coefficients of any one variable. You can use multiplication. Now एक बार उनका coefficient same हो जाएगा, then you got to check. You have to check the sign of these coefficients. So step number 2 is very important. Then you have to check. क्या check करना है? Check the signs of these same coefficients. So in the first equation suppose you have 2x, in the second equation you have 2x, then you have to check their signs. दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, है ना. अगर उनका साइन सेम है, इफ बोथ हैव सेम साइन, इफ बोथ ऑफ देम हैव सेम साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर उनका साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो याद रखना यू हैव टू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. देन सबट्रैक्ट द इक्वेशंस. इफ बोथ द वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन, देन सबट्रैक्ट. And if they have opposite signs, then you add. And if they have opposite signs, opposite sign में एक positive एक negative होगा. Any one can be positive, one can be negative. So if they have opposite signs, then you have to add the equation. So opposite signs होगा तो याद रखना you have to add both the equations. Same sign होगा तो subtract करना है, opposite signs होगा तो add करना है. Okay. So एक वेरिएबल उसमें एलिमिनेट हो जाएगा, यू गेट द आंसर देन. Add both the equations to eliminate one variable and get the other variable. उसके बाद वही करना है, make substitution, you get the second variable also. So these are the fine points, the most important points. You have to equate the coefficients. दोनों इक्वेशंस में x और y किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाना है. ओके, उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. दोनों कोएफिशिएंट सेम होने के बाद उनका साइन चेक करना है. अगर दोनों का साइन सेम है, इफ दे हैव सेम साइंस देन यू हैव टू सबट्रैक्ट देम. ओके, एंड इफ दे हैव ऑपोजिट साइंस देन यू हैव टू ऐड देम. ये अच्छे से याद रखो.
तो उसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और सेकेंड का वैल्यू मिलेगा, एंड देन सब्स्टिट्यूशन से आपको सेकेंड वेरिएबल भी मिल जाएगा. So let's solve, one example that'll make the whole method very clear to you all. So I'll write one example. Let's take one example. The first example, suppose I take two equations, 5x plus 2y equals to minus 3. This is the first equation, okay? And the second equation is given as x plus 5y is equal to 4. X plus 5y is equal to 4. Clear? So these are the two equations here. 5x plus 2y is minus 3 and x plus 5y is equal to 4. Now let's check their coefficients. First equation में x का coefficient 5 है और second में 1 है, right? यहाँ पे y का coefficient 2 है और यहाँ पे 5 है, तो उनका coefficient सेम नहीं है. x का भी सेम नहीं है, y का भी सेम नहीं है, तो हम लोग को सेम बनाना पड़ेगा. किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा. सो आपको देखना है, यू हैव टू थिंक एवरी टाइम कि कौन सा कोएफिशिएंट सेम बनाना इजी होगा, जल्दी बनेगा. सो आई कैन मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x1, ये जो 1 है ना, इसको आई कैन मेक 5 इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 5, राइट? अगर हम लोग ये पूरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5x हियर. इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अज्यूम this equation as equation 1 and let's take this as equation 2, and to make the coefficient of x same, you can say multiplying equation 2 by 5. So I multiply the second equation by 5. Now if I multiply the second equation by 5, I'll get 5x. सबको 5 से multiply करना है second equation में, पूरा second equation को 5 से multiply करना है. So you get 5x plus 5 into 5y becomes 25y. That's be equal to 5 into 4 becomes 20, right? I can mark this as equation 3. Clear? So here now we can see equation 1 and equation 3, उनमें दोनों में x का coefficient same है. Clear? You have 5x and 5x, right? Now we check their signs. ये भी positive 5 है और ये भी positive 5 है, right? मैंने बोला था अगर सेम साइन होगा, दोनों का साइन सेम होगा. सेम साइन होगा तो क्या करना है? सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है. सर सेम 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 आया तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऑपोजिट साइंस होगा तो ऐड करना है. सो यहाँ पे सेम साइंस है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दोज टू इक्वेशंस, राइट? सो आई कैन से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3. सो वी कैन से सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 3. Subtracting equation 1 from equation 3. Now when I say from 3, means you should write 3 first and then 1. You have to write 3 and then 1. So I'll write the equation 3 first. Equation 3 was 5x plus 25y was equals to 20. This was equation 3, right? And equation 1 was 5x plus 2y. 2y is equals to minus 3. And now you have to subtract both the equation. Subtract मतलब माइनस करना है. माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा सारे टर्म्स का, राइट? तो साइन का भी ध्यान रखना है सब लोगों को. तो यहाँ पे 5x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बराबर? ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, चेंज द साइंस. दिस इज पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव सब्ट्रैक्ट किया तो, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव सब्ट्रैक्ट किया तो, एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. वो साइन चेंज करने का, साइन चेंज करके नाउ यू कैन ऑपरेट. सो व्हेन यू ऑपरेट यू कैन सी this 5x and minus 5x gets cancelled. This 5x and minus 5x gets cancelled. 5x minus 5x is 0. Solve further then. उसके बाद देखो 25y minus 2y. 25y minus 2y. 25y minus 2y becomes 23y. So I'll write 23y. In the right hand side you get 20 plus 3. That becomes 23, right? So y is equal to 23 upon 23, or you can directly write y is equal to 1. Clear? So the value of y comes out to 1. Is that clear? So you got one variable eliminated. आपने variable x को eliminate कर दिया और y का value मिल गया, right? Now y का value मिला, उसके बाद you can substitute this y in any one equation. So you can write substituting y equal to 1. I'll write substituting y equal to 1 in equation, any one equation which is easy for you. I can take equation 1. So I'll put y equal to 1 in equation 1. When you put y equal to 1 in equation 1,
See what you get there. When you put y equal to 1 in equation 1, so put y equal to 1 here in the first equation. The first equation is 5x plus 2y is minus 3. Put y equal to 1 here. So you get 5x. You will get 5x plus 2y. So 2 into 1 is equals to minus 3. Right? So you get 5x is equals to 2 ones are 2 होता है और वो 2 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो minus 3 minus 2 आएगा. It's going to be minus 2 minus 3. So it's minus 5. So x will be equal to minus 5 upon 5. That becomes minus 1. Right? So you can write the final answer here. Therefore, x equal to minus 1 and y equal to 1. X equal to minus 1 and y equal to 1 is the solution of the given equations. Or you can also write the solution as minus 1 comma 1. Minus 1 comma 1 is the solution of the given equations. Is that clear? So in this equation, we made the coefficient of x same by multiplying 5 to the second equation. x का कोएफिशिएंट सेम होने के बाद उनका साइन सेम था तो सबट्रैक्ट किया, x एलिमिनेट हो गया और y का वैल्यू मिला. क्लियर? सो हर बार यही करना है आपको. यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम and then you can eliminate and solve. Clear? Let's solve one more question here. Suppose you have the second example is, or you have a question, say 5m minus 3n equals to 19, the first equation. Okay, and the second equation is m minus 6n is equals to minus 7. This is the second equation. So look at this equations here. यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन में x का m का कोएफिशिएंट इज 5. कैन यू सी हियर? और यहाँ पे m का कोएफिशिएंट इज नथिंग गिवन देयर, सो इट्स 1. सो दे आर नॉट सेम. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इज 3 minus 3 एंड यहाँ पे 6 है. So there are two methods. Either you can make this 5 or you can make this 6. Now इसको अगर 6 बनाना, I can multiply the first equation by 2, right? So what I'll do is we assume this as equation 1 and this as equation 2, right? Now if I have to make the coefficient of n same, I'll say multiplying equation 1 by 2. If I multiply the first equation by 2, पूरा equation को 2 से multiply किया तो 2 into 5 becomes 10m, 2 into 3 becomes 6n, and 19 2s are 38 आएगा. So 10m minus 6n is equal to 38. 10m minus 6n is equal to 38. Okay, that's equation 3. Now you can see in the second equation and third equation, the coefficients of n are same, right? 6n और दोनों का साइन भी सेम है, माइनस माइनस है. सेम साइन होगा तो वापस सबट्रैक्ट करना है. सो वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. सो फॉर दैट आई विल राइट सबट्रैक्टिंग equation 2 from equation 3. Subtracting equation 2 from equation 3. From 3 means first I'll write 3. So 3 was 10m minus 6n equal to 38. And the first equation was m minus 6n is equal to minus 7. Okay. Subtract करोगे तो sign change होगा. So you have to change the signs also. So you are subtracting them. Change the signs now. Come on. So that plus m becomes minus 6n becomes plus 6n. Okay, and this minus becomes plus. Clear? Now solve this further. Come on. So 10m minus m becomes 9m. Then 6n and minus 6n gets cancelled. 6n and minus 6n gets cancelled. और right hand side में आपको मिलेगा 38 plus 7. What is 38 plus 7? 38 plus 7 is 45. So I got 9m is equal to 45. So m will be equal to 45 upon 9. 45 upon 9 will give you m is equal to 5. Right? So I get m is equal to 5. M is equal to 5. That is my first variable ka answer. Clear? Now once I get m is equal to 5, I can substitute m equal to 5 in any one equation. So you can write substituting m equal to 5. Substituting m equal to 5
in equation 1. So when I put m equal to 5 in the first equation, I'll get 5 into 5 minus 3n is equals to 19. So 5 5s are 25 minus 3n is equal to 19. Now shift this 19 or 25 on that side, you get minus 3n equals to 19 minus 25. So minus 3n equal to minus 6. Minus minus gets cancelled. N is equal to 6 upon 3. So n is equals to 2. Clear? N is equals to 2. So now you can write the final answer. Therefore the answer will be what? Tell me the final answer. So final answer should be, therefore m equal to 5 and n equal to 2 is the solution of the given equations. Or you can say 5 comma 2. 5 comma 2 is the solution of the given equations. 5 comma 2 is the solution of the given equations. Is that clear? Solution of the given equations. Let's solve one more example where you have fraction, where you convert and then do the elimination method. So let's take the last example here, the third example. So suppose you have equations. 1 by 3x plus y is equal to 10 by 3. This is the first equation given there. And the second equation is 2x plus 1 upon 4y is equal to 11 upon 4. So I'll start the first equation. Since you have fractions, I'll make the equations easy first. The first equation is 1 by 3x plus y equal to 10 by 3, right? Now you have 3 in the denominator, so I have to remove that denominator. I'll say multiplying throughout by 3. I multiply the entire equation, multiplying throughout by 3. If you multiply the whole equation by 3, first term को 3 से multiply किया तो cancel हो जाएगा, you'll get 1x. Second term को 3 से multiply किया तो you'll get 3y. And right hand side को 3 से multiply किया तो 3 cancel होगा, you get 10. Is that clear? If you multiply this term by 3, this gets cancelled, you get x. इसको 3 से multiply किया तो you get 3y. और इसको 3 से multiply किया तो 3 cancel होगा, you get 10. Clear? So I got x plus 3y is equal to 10. X plus 3y is equal to 10. I'll mark this as my equation 1. Clear? So this is equation 1. Now the second equation. So the question ka second equation is given as 2x plus 1 by 4y equal to 11 upon 4. So you tell me, नीचे 4 निकालने के लिए क्या करोगे? You have to say multiplying throughout by 4. Multiplying throughout by 4. So multiply the entire equation by 4. Now when you multiply the first term by 4, it becomes 8x. इसको 4 से multiply किया तो 4 cancel हो जाएगा, right? और इसको 4 से multiply किया तो 4 cancel होगा. So when you multiply the entire equation by 4, you get 8x. You will get 8x plus y will be equals to 11. 8x plus y is equal to 11. Clear? So that's your equation number 2. Done. So you have equation 1 is x plus 3y is 10 and the other equation is 8x plus y is equal to 11. Now यहाँ पे भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है. x का कोएफिशिएंट here is 1 और यहाँ पे 8 है तो सेम नहीं है. y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 1 है तो ये भी सेम नहीं है. So either you make coefficient of y same or x same. So what is easy here is I'll make the coefficient of y same in the second equation. उसको सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में 3y है, राइट? तो सेकेंड इक्वेशन में 3y लाने के लिए क्या करोगे, जल्दी बोलो. यू मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय 3. सो यू कैन से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3. सो आई विल से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3. सो यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, you get 8 3s are 24x plus 3 into y becomes 3y and 3 into 11 becomes 33. This is my equation 3. That's equation 3. Is that clear to all?
So this is equation 3. Now check the third equation and the first equation. दोनों में y का कोएफिशिएंट सेम है अभी, राइट. हियर यू हैव 3y एंड हियर ऑल्सो यू हैव 3y, और उनका साइन भी सेम है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों सेम साइन है, तो वी सबट्रैक्ट देम सो दैट y गेट्स कैंसल्ड. सो वी से subtracting equation 1 from equation 3. From 3 means I'll write 3 first. So 24x plus 3y equals to 33. This is my equation 3, and equation 1 was x plus 3y equals to 10. और इनको subtract करना है. subtract करोगे तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, राइट. सो वी हैव टू चेंज द साइंस हियर. सो यू हैव प्लस, x is plus, this becomes minus, plus becomes minus, and plus becomes minus. So here the answer will be 24x minus x. Now 24x minus x becomes 24x minus x becomes 23x. 3y minus 3y gets cancelled, and 3y minus 33 minus 10 becomes 23, right? So come on, solve everyone. You have to solve this. 24x minus x becomes 23x. Then 3y and minus 3y gets cancelled, right? And बाकी बचेगा आपके पास 33 minus 10. 33 minus 10 is equal to 23. So you get 23x is equals to 23, right? Therefore x is equals to 23 upon 23, or you can directly say x is equals to 1. So x equal to 1 is the value of one variable. You got the answer here. Clear? So this is the first variable. Now make substitutions and get the second variable. So you can put x equal to 1, substitute x equal to 1 in the second equation. When you put x equal to 1 here, it becomes 8 ones are 8 plus y equal to 11, है ना, वो orally solve हो जाएगा. So write substituting x equal to 1, substituting x equal to 1 in equation 2. So you can put x equal to 1 here. You get 8 into 1 is 8 plus y equals to 11. 11 को आप 8 को आप शिफ्ट करो, 11 minus 8, और you can directly write y is equal to 3. y is equals to 3. Clear? So you can write the final answer. Therefore, what is the final answer here? You got x is equals to 1 and y is equal to 3. So you can say x equal to 1 and y equal to 3 is the solution of the given equation, or you can say 1 comma 3 is the solution of the given equation. Is the solution of the given equations. Now one more thing to say, all these equations, okay, I'll say in every lecture, all these equations you had unique solutions. हर सम में तुम लोग लास्ट में x का एक और y का एक वैल्यू मिला है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, okay, unique solutions. Clear? So this was method of elimination. Please practice more questions so that you get used to this method. Thank you so much, students.